जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Let us celebrate the spirit of nationalism and freedom with a group song presentation by students of classes 8 to 12. Swaraj. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करना पर्वत राज विराट
minute in equipping yourself for the world. You have to be future ready. So with these words, I hope all of us will make India great by putting an effort in the right direction and at the right time. So all the best to dear teachers. Wish all of you a very, very happy Independence Day, 75th year of our country's independence, and we will resolve, we will today promise ourselves we'll make our India greater than what it is today. Next 25 years are the years of this generation, these students, and all of you will see that you will walk in that direction, which will not only bring pride to yourself but to your nation. God bless you all. आज़ादी विचारों की, स्वच्छंदता आचरण की, और आज़ादी एक धर्म को और उस धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करने की, ये है हमारी अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ। इसे नहीं खोना है, और इसे नहीं खोने के लिए और इसको अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यकता है हमारे अपने मूल्यों को जानने की। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो क्यों हैं? हम इसलिए हिंदुस्तानी और भारतीय हैं क्योंकि हम भारतीयता में विश्वास रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, हम सर्वधर्म एक में विश्वास रखते हैं, और हम भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तय नहीं करेंगे कि हम कितनी हद तक भारतीय हैं, और कोई एक दिन हमें ये नहीं कहने पे मजबूर करेगा कि आज के दिन हम हिंदुस्तानी हैं। Live India, breathe India, every day, every moment. Rise up and be an Indian today and always. Jai Hind. It's an auspicious occasion. Azadi Ka Amrit Mahotsav. Share it with your family, share it with your loved ones, and it goes for the next generation also. You will be old one day and then you will have the next generation to guide. So share this same message with everyone. Thank you and Jai Hind. मैं भारत एक राष्ट्र के रूप में, मेरा इतिहास अति प्राचीन है, संभवतः उतना प्राचीन जितनी काल की आयु है। मैं भारत राष्ट्र, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, उनमें से एक भाग की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। भारत संसार के मस्तक का तिलक, मानव सभ्यता का पालना, जिसने सभी रंग रूप के मनुष्यों को, सभी देश के निवासियों को खुली बाह और उदार हृदय से गले लगाया। लेकिन भारत आने वाले विदेशियों में बहुत से ऐसे भी थे जो भारत की आर्थिक संपन्नता को ललचाई आंखों से देख रहे थे। उनमें से कुछ ने लूटपाट की, कुछ ने नरसंहार किए, और किसी ने व्यापारी बनकर छल से इस महान देश की पीठ में खंजर भोंक दिया। कैप्टन विलियम हॉकिंस, ब्रिटिश अधिकारी जो मुगल दरबार में एक प्रार्थना पत्र लेकर आया। उस चतुर अंग्रेज अधिकारी ने फारसी बोलकर मुगल बादशाह जहांगीर को प्रसन्न कर लिया और भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। धीरे धीरे इन अंग्रेज व्यापारियों की वास्तविक मंशाएं स्पष्ट होने लगी और सन 1757 में प्लासी के मैदान में भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सौ वर्ष बाद मातृभूमि के कुछ संतानों ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़ने के लिए एक युद्ध छेड़ा।
वल्लभ पांडे की फांसी क्रांति की मशाल बन गई। इस मशाल से पूरा उत्तर भारत जल उठा। अंग्रेज सिपाही मारे जाने लगे। कल तक जो भारतीय ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे, उन्होंने बगावत कर दी और लाल किले पर कब्जा कर लिया। एक चिंगारी सिर से जुनून तक ले जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिर से जुनून तक ले जाना, हर कतरा बोल रहा है। विद्रोहियों में एक वीरांगना ऐसी थी जिसके पराक्रम से गोरी चमड़ी झुलसने लगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके शौर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात दुर्गा राक्षसों की मुंडमाला पहनने रण में उतर आई। गुलामी की जंजीरें आजादी है पानी, हो थर्राई है धरा गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी है पानी। निकल विवश भारत में अब है जीत की लो जलानी, फिरंगी को खदेड़ कर उसने मन में खाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अंग्रेजों ने इस आग को तो बुझा दिया, लेकिन चिताओं के भीतर धधकते अंगारों को वे नहीं बुझा सके। समय समय पर ये अंगारे ज्वालामुखी की आंख बनकर साम्राज्यवादियों के झंडे जलाते रहे। ऐसी ही आग भारत के आदिवासियों के तीर कमान से विप्लव लेकर निकलती रही। बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। रेडियो को तोड़ कर तू छीन ले अपनी ज़मीन, उठ कलेजे पे सुबह आज़ाद हिंदुस्तान की। ऐलान कर ललकार भर ललकार भर, ऐलान कर ललकार भर ललकार भर, जान से प्यारी मुझे मेरी अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई भारत के जंगलों से लेकर
गांव और शहरों तक चल रही थी। स्वतंत्रता के कुछ ध्वजवाहकों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल लंदन तक पहुंचा दिया और लंदन भारतीय क्रांतिकारियों की गुप्त गतिविधियों का केंद्र बन गया। वाइली के वध के बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। बहुत से क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। की आखिरी उम्मीद भी अंडमान की सेल्यूलर जेल में दम तोड़ देती थी। उस सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत के वीर सेनानियों ने मां भारती के लिए वंदना के गीत लिख दिए। अंडमान का ये जज्बा देशभक्ति के आंदोलन का ईंधन बना। इस ईंधन ने अशफाक, बिस्मिल, आजाद जैसे युवाओं को सरफरोशी का लौह संकल्प दिया।
टिके साम्राज्यवादी विचार को विचार से काटने के लिए, पश्चिम में फैले अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य का उदय हुआ, जिसने संघर्ष में डूबी मानव सभ्यता को मानवता का पाठ पढ़ाया। पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पल था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजादी के आंदोलन में भाग ले रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। ऐसे में बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ी। जब पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा हो गया, तब ब्रितानी साम्राज्य की रक्षा के लिए उसकी आखिरी उम्मीद उसकी सेना थी। लेकिन राष्ट्रनायक ने अंग्रेजों के इस कवच को ही तोड़ दिया और रॉयल आर्मी में बगावत हो गई।
100 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिल गई। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। Everyone put your hands together. जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। लेकिन इस आज़ादी को बचाकर रखना कोई आसान कार्य नहीं। हमारे पड़ोसी देश आए दिन घात लगाकर इस ताक में रहते हैं कि कब और कैसे हमारे देश को तोड़ सकें। लेकिन सरहद पर दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में हमारे सैनिक देश की और हम सब की सुरक्षा के लिए तैनात हैं।
सत्ता जिस देश के सरहद पे हम जवान हैं। वंदे मातरम। देश की रक्षा का दायित्व हमारे सैनिक अपनी जान देकर भी पूरा करते हैं, लेकिन देश की आन बान और शान को बढ़ाने का काम हमारे देश के खिलाड़ी, वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री इत्यादि करते रहते हैं। तभी आज पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सबको गर्व है अपनी मातृभूमि पर, अपने भारतीय होने पर। I want everyone in the arena joins together on this beat. Everyone, put your hands together. Hands up in the air, everyone. Flags up, everyone. Let's celebrate the victory of Indians in every field. Let's celebrate the valor and sacrifice of all the freedom fighters on this 75th years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Celebrating our honors on 25 years of independence. ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एकता का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये रंग चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा, हमारा तिरंगा प्यारा। Sports, culture, science, freedom, everyone put your hands together for the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Vande! 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 86 students, one song, one nation. India celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Please put your hands together for all the students. And a congregation of 45 songs together and 30 minutes of choreography on the stage. Put your huge round of applause for all the students on the stage. Thank you for the moving performance. It's such an overwhelming feeling to witness this engrossing tale, the Amar Gatha, a reminder for each one of us that the freedom is gifted from us from our ancestors, should be valued by us, the citizens of India. On the midnight of 14th August 1947, India gained its freedom and we adopted a constitution and pledged to abide by it. It infuses some primary and vital laws upon its citizens as well as grants some. Here is the head prefect of Sunbeam Sun City, Anshika Kanojia, to enlighten us upon fundamental rights and duties. Greetings to the respected dignitaries, admins, teachers and students of Sunbeam Sun City. Wishing you all a very happy Independence Day. The word independent has not been more relevant than the current times we are living in. Sri Lanka's economic collapse due to mismanagement of economics
and the ongoing war between Ukraine and Russia, Qatar's illiberal attitude to free speech and LGBTQ plus rights in a country where it remains dangerous to openly criticize the government, and no provision for the protection or recognition of minorities in North Korea, the risk of new interstate conflicts, the breakdown of rules-based international order and the spread of autonomous weapons, the COVID-19 pandemic, the climate emergency, the struggle between democracy and dictatorship, and the humanity crisis, mass migration, and transnational terrorism. There are some current issues enveloping the world around us, and there are things which are out of our control. And some are things which can be rebuilt and do better. There are people in many countries who are still struggling with their rights. We as Indian citizens are gifted with the fundamental rights that are underlined by our constitution. Fundamental rights are recognized to ensure physical, mental and moral development of every citizen. They provide standards of conduct, citizenship, justice, fair play, and generates a feeling of security amongst the minorities in the country. There are 6 fundamental rights. First, right to equality. Right to equality means that all citizens enjoy privileges and opportunities. It protects the citizens against any discrimination on the basis of religion, caste, race, gender, or place of birth. Second, right to freedom. Freedom is the basic characteristic of a true democracy. Hence, our constitution in Article 19 guarantees the following 6 fundamental freedoms against state and not private individuals. Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associations or unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of the country, freedom to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. Third, right against exploitation. Right against exploitation prohibits all forms of forced labor as well as human trafficking. Any violation of these provision commodities for immoral purposes such as slavery and prostitution is an offense punishable law. Freedom to right of religion. The Constitution guarantees to every person freedom of conscience and the right to practice and propagate any religion. It also permits every religious group the right to manage its own affairs in matter of religion. Fifth, culture and educational rights. Our Constitution under Article 29 and 30 provide guarantees to preserve, maintain and promote culture and language of its citizens, allows minorities to establish and maintain educational institutions of their own. 6. Right to constitutional remedies. Constitution provides for legal remedies for the protection of all these rights and their violation by the state or other institutions or individual. It entitles the citizens of India to move to the Supreme Court or the High Courts for the enforcement of these rights. Any law that may be in the conflict with the fundamental rights stands null and void. Fundamental duties are defined as a moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Following are the duties of each Indian: to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sexual diverities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to observe violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements. Who is the parent or guardian to provide opportunity for education to his child, or the case may be, what between the age of 6 and 14 years. As our nation celebrates the 75th anniversary of India's independence, it is also time to revisit
that what did India's visionaries and freedom fighters dreamed of? What has been our challenges and achievements? India at 75 is a mixed bag of development and missed opportunities. The country has achieved much since independence, but a lot remains to be done to become a developed society. We are going to be the next generation of our country's change makers, and hence we are responsible for the growth of our country. An individual, we can contribute to society by developing our character, talents and well-being. Contributing to society strengthens fundamental human connections and decision-making processes. I hope each one of you who has been the part of this auspicious day of 75 years of independence decides to become the Bhagya Vidhata, the change makers when this nation completes 100 years of independence. Let's march together and build a progressive, tolerant and cohesive society and nation. And last but not least, I want to say that I am a proud Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for throwing some light on our rights and for giving the essence of being empowered. Sunbeam Sun City Band is the pride and mini replica of our armed forces, which shows the unity is strength, integrity of our personnel and represents the diversity of our nation. To showcase the same, we have the school band presentation by the students of Sunbeam Sun City.
आज मैं आयुष्मान आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमें मिली आज़ादी। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छाया में छोटा सा यह संसार है, उसकी आंचल की छाया में छोटा सा यह संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Happy Independence Day, everyone. Celebrate this day. As rightly said by everybody, it's an auspicious day. So God bless you all. Enjoy the day and definitely do read a little bit about this country's struggle. God bless you. So thank you all of you for your patience, and thank you all the dear teachers and the students for giving us these lovely presentations. Dear students, it is just not a presentation. It is portraying the Indian independence and making us feel and making us recall the people who have undergone such pain to give us this freedom. So let us all value this freedom. Thank you all of you, and Jai Hind.